Today we will study the proof of existence theorem. This is in fact first existence theorem for nonlinear problems. This is known as existence theorem, and this is also known as Picard's theorem or Picard-Lindelöf theorem, or simply we say that Picard's existence theorem. So firstly, I am writing statement of this theorem. So we consider the initial value problem. Dy by dt equal as f of ty with one condition. When t equals to t naught, you know the solution, which is y naught. And let D be an open set in R2. So this is my domain. So this can be anything. This is my domain D. Uh, Domain in R2 that contains point T naught, Y naught. So you have some domain D, and in this domain, T naught, Y naught is inside. And assume that the function f, which is defined on that domain D to R, and this function is continuous in T and ellipsed in Y with constant L. So this means this function is continuous at least in T. It is okay if it is continuous for every T and Y, and it satisfies ellipsed condition with respect to Y with ellipsed constant L. Then there exists alpha positive such that the you can write initial value problem as IVP in short, such that IVP has a solution on interval T naught minus alpha to T naught plus alpha, and this solution is unique. Okay, so statement looks bigger, but what we are saying, you have IVP, this differential equation plus condition. You have some domain in R2 which contain initial point, and in this function is continuous in T, satisfy ellipsoid condition. Then there exists an interval around T naught
there exists an interval around, let us say this is T naught. So there exists an interval T naught minus alpha, T naught plus alpha. And in this interval, solution exists. And further, this solution is unique. ये हमने प्रूव करना है कि there exists a solution. And there are many proofs of this theorem. I am using the proof which is based on, that is a classical proof, which is based on Picard's successive approximations. I hope statement is clear. Okay. So now we formally prove. So firstly, I am rewriting the assumptions. Let us consider, so what you have? You have initial value problem. Okay. You have domain, let D be an open set in R2. That contains T naught Y naught. Let F is continuous and it satisfies Lipset condition. With constant L. With respect to Y. So these are assumptions that they are given. So how we prove this theorem? So we have a domain which is a bigger set. So firstly we choose a rectangle A that is centered at T naught Y naught. So what I do? So I take a rectangular region, and this is the central point T naught Y naught. Okay, which is centered at T naught Y naught, and so that this is a subset of given domain. Maybe domain is bigger. This is D, and you take a subset which is rectangle. तो अब रेक्टेंगल को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी कि जो A है, कई वे है लिखने के. So you can write T naught minus A to T naught plus A cross Y naught minus B to Y naught plus B. ये भी लिख सकते हो, और हम ये भी लिख सकते हैं. लिखने का वे है जस्ट, that is T minus T naught less than A, Y minus Y naught less than B. So A is a constant, so you have taken this region. Okay, so this is center. इधर जाओगे आप लेफ्ट में, that is this point is T naught minus A,
और इधर जाओगे तो ये टी नॉट प्लस ए। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में वाई नॉट जो मिनिमम है वाई नॉट माइनस बी है और मैक्सिमम वाई नॉट प्लस बी है। ठीक है, रेक्टेंगल को क्रॉस मतलब दो सेट हैं, तो टप्पल लिखोगे तो सारे ये पॉइंट्स बन जाएंगे रेक्टेंगल के। दोनों वे में आप लिख सकते हो। सो ओके, यानी कि हमने क्या लिया, हमने एक बाउंडेड डोमेन ले लिया, एक रेक्टेंगल। अब कंडीशन क्या है, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, अब क्लोज सेट पे है, ए पे है, सो इट इज बाउंडेड होगा ना। सो एफ इज बाउंडेड। कंटिन्यूटी implies boundedness on closed set, that is sorry that is f of ty less than or equal to some constant m for every xy in a। ओके, लिख सकते हैं ना ऐसे। So now we define the radius of interval of existence, which is alpha, that is minimum of a and b by m। यानी कि अब आपका डोमेन ये है, तो कहने का मीनिंग है जो एग्जिस्टेंस है हो सकता है स्मॉलर इंटरवल में हो, और जो स्मॉलर इंटरवल मैंने कैसे डिफाइन किया है, मिनिमम ऑफ ए, जो दोनों में मिनिमम होगा, ए तो है ये डिस्टेंस है। आप ये पॉइंट टी नॉट था सेंटर, टी नॉट से ए लेफ्ट में जा रहे हो तो ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, तो ए और बी बाई एम में जो मिनिमम होगा। अब ये b by m कैसे आएगा, आई विल डिस्कस लेटर व्हेन आई विल राइट Picard's approximations, so from there it will come b by m। ठीक है, तो यानी कि उसके जो जो आपका इनिशियल पॉइंट है, एक्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहता है कि जो आपने यहाँ से शुरू किया है, जो इनिशियल पॉइंट है, एट दिस पॉइंट यू नो द सॉल्यूशन, और समटाइम वी से दिस थ्योरम एज लोकल एक्जिस्टेंस थ्योरम। लोकल का मीनिंग है कि you know solution at one point, then there exists a solution nearby, यानी कि उसके अराउंड, उसके आसपास में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये आपका थ्योरम मेनली कहता है। So up to now I have just rewritten the assumptions and have taken a rectangular region denoted by A. In this region continuity implies boundedness on a closed set, so I have written that f is bounded। Now I write Picard's approximation, then we will move further। Okay, so we will show that there is a continuous function y on interval t naught minus alpha to t naught plus alpha, which satisfy
the integral form of differential equation we have written earlier, that is yt, जो इंटीग्रल फॉर्म था इसका dy by dt का, t naught to t f t y, you can write t in place of s. So we show that this satisfies the integral form. So we construct Picard's approximations on interval t naught minus alpha to t naught plus alpha. तो हमने अप्रोक्सीमेशन लिखे थे, फर्स्ट क्या होगा इसका, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज phi 1 लिखा था मैंने, phi 1 और y 1 यू कैन राइट, so I am writing y 1 as y naught जस्ट नोटेशन है। वैसे हमने इसको phi 0 लिखा था ना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को, phi 0 को मैं y 1 लिख रहा हूँ। आप अब y 0 तो नहीं लिख सकते हैं दोनों साइड में, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है ये y 0। देन रिकर्सिवली we define a sequence of functions। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, denoted y2, sorry there is no x, t लिखना है ना यहाँ। सेकंड अप्रोक्सीमेशन विल बी y0 plus t naught to t f t, अब इसमें y1 यूज होगा और t को मैंने लिखा है s, सो यू कैन राइट, लिमिट में t है तो आप यहाँ पे s लिख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वुड बी y3, that is y0 t naught to t fs y2 and so on, and in general we have written phi k plus 1 या n plus 1, कोई भी आप नंबर लगा दो। So I am writing y n plus 1 which is y0 plus t naught to t okay। Any doubt up to this point? We have just written Picard's approximations, okay। Should we proceed further? So अब हमारा एम क्या है, we will show these approximation firstly they converges, and you know when a sequence converges it has a limit point। तो हम शो करेंगे कि ये कन्वर्ज करेंगे, जो इनका लिमिट होगा दैट लिमिट इज इन फैक्ट सॉल्यूशन, ओके। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा था ना कल, ये सीक्वेंस लिखे थे, अब बार बार लिखोगे आगे सीरीज बढ़ता जाएगा, एंड दीज ऑल दीज अप्रोक्सीमेशन कन्वर्जेस टू सॉल्यूशन e power 2t minus 1। So in the same manner now we are providing generalized proof, okay। So mathematically we prove that these approximation converges। So our goal is to show that this sequence converges, in fact it converges uniformly, uniform convergence,
to some continuous function denoted by yt, which satisfy the integral form of IVP. So firstly, first of all, we show that for each n, the of graph of each yn is inside rectangle, inside the rectangle A. अब जो आप सोल्यूशन लिख रहे हो ना, तो उस रीजन के अंदर भी तो होने चाहिए ना, ये जो डोमेन है आपका रेक्टेंगल, ठीक है, उसके इनसाइड रहेगा। ये हम फर्स्ट शो करेंगे। तो पहला फंक्शन क्या है आपका? फर्स्टली, सो दिस इज ट्रू फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन विच इज y1। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का लोकेशन क्या है? ये रेक्टेंगल था, ये तो ये अंदर ही है, पहला सेंट्रल पॉइंट है ये। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लाई इनसाइड, इट इज ऑब्वियस। ओके, अब इंडक्शन लगा देंगे। तो इंडक्शन कैसे लगाते हो कि फर्स्ट n इक्वल टू 1 इट इज ट्रू, y1 लाइज इनसाइड। फिर आप क्या करोगे? आप ये मान लोगे कि जो yn है, yn लाइज इनसाइड, yn इनसाइड है, मान लो कहीं कहीं पे भी है। तो इंडक्शन कैसे प्रूव करोगे? देन यू शो दैट yn plus 1 that also lies inside. Then by induction you can say every yi will belongs to that region. Okay, so we apply induction. So firstly you assume that the graph of yn is inside the region rectangle A. So using this we define, अब अगला अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? हमने डिफाइन किया ये yn plus 1 पिछले पेज पे। तो yn plus 1 माइनस y0 लिख रहा हूं मैं, यू कैन पुट ए मॉडुलस। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आएगा? t0 टू t f of s yn ds। ओके, सो मेक एवरीथिंग पॉजिटिव ऑन राइट हैंड साइड। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मॉड, टेक मॉड इनसाइड द फंक्शन, या आप इसको ये भी लिख सकते हो। अगर मैं देखो राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं कैसे लिख रहा हूं इस मॉड को? फंक्शन को पॉजिटिव बना दिया मैंने, ठीक है, फंक्शन को सेपरेट कर दिया मॉडुलस। अब लिमिट है, अब डेफिनेट इंटीग्रल किस पे डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन है वो भी पॉजिटिव है, और लिमिट क्या होनी चाहिए? लोअर टू बिगर अगर हो तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, फंक्शन पॉजिटिव, लिमिट लोअर टू बिगर। तो या तो आप इसका, अब t अननोन है, t नहीं पता ना कि आपका, मान लो ये t0 है, तो t यहां पे अगर होगा, दिस इज t0, so t is bigger than t0, but t can be on left hand side as well. Okay, so t can be less than t0, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, t लेस देन भी t0 हो सकता है और बिगर देन भी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, या तो आप प्रूफ को
कई बुक्स करती दो 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 पार्ट में प्रूफ कर लो, ये एक बार ये ज्यूम करो, एक बार ये, बट दोनों में जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी सेम। तो मैं इसको इकट्ठा लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, जो लिमिट है लोअर मिनिमम, मतलब लोअर टू बिगर लिख रहा हूँ। तो जो मिनिमम टी और टी नॉट में जो छोटा होगा वो लोअर लिमिट होगा, और यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टी टू टी नॉट, टी कॉमा टी नॉट। ओके, सो यू कैन कंबाइन बोथ केसेस। तो कहने का मीनिंग है जो जो इंटेग्रल है वो लोअर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर वाली में है ये। अगर टी स्मॉल होगा तो टी लोअर लिमिट में आ जाएगा, अगर टी नॉट स्मॉल होगा तो टी नॉट लोअर लिमिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन भी पॉजिटिव है। अब हमने वहां पे लिखा था प्रूफ बाउंड, फंक्शन बाउंडेड है, तो उसको क्या लिख सकते हो, एम, एफ की जगह एम लिख सकते हो। तो बचेगा क्या, इंटेग्रल डीएस का इंटेग्रल एस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो भी लिमिट लगाओगे, चाहे आप टी नॉट टू टी लगाओ और टी टू टी नॉट, यू हैव ए मॉडुलस। जब मॉडुलस लगाओगे तो आंसर क्या आना है, मॉड टी माइनस टी नॉट लिखो या आप टी नॉट माइनस टी लिखो, सो बोथ आर सेम। ओके, डीएस का इंटीग्रल कर दो, अपर लिमिट लगा दो लोअर लिमिट लगा दो, सो दिस साइड विल वुड बी बिगर, पॉजिटिव बना दो उसको, टी माइनस टी नॉट। अब टी माइनस टी नॉट रेक्टेंगल में दिस इज लेस देन ए, लिखा ना हमने शुरू में, तो रेक्टेंगुलर रीजन में टी माइनस टी नॉट लेस देन ए, सो एम ए। और अब ये यानी कि अब y का दो डिफरेंस है, ये y अगर y की वैल्यू है ये, सो तो ये लेसन क्या होगा, अब यहाँ पे मैं कंडीशन डाल रहा हूँ, इफ दिस इज लेस देन बी, so I am putting condition here, okay, so if this is less than b, तो यहाँ से क्या आ गया, अब जो आपका रेक्टेंगुलर रीजन है, सो आई एम रीराइटिंग हियर। अब रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर है क्या हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, मान लो ये सेंटर है, तो जो y की वैल्यू है ये y नॉट है, एंड दिस पॉइंट इज y नॉट माइनस बी, एंड दिस इज y नॉट प्लस बी। यहाँ आप ये कह सकते हो y माइनस वाई नॉट लेस देन b इन दिस रेक्टेंगुलर रीजन। तो अगर ये लेस देन b हो, आई एम पुटिंग कंडीशन हियर, देन दिस y माइनस वाई नॉट अगर लेस देन b है, तो उसका मीनिंग क्या है, वो सारे y इसके अंदर हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या है, y आपका कहीं पे यहाँ पे होगा, कहीं पे यहाँ पे होगा, इसका मीनिंग क्या है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो y रेक्टेंगल के अंदर होगा। तो अब आपका वाई एन प्लस वन भी, वाई एन प्लस वन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, दिस मीन्स वाई एन प्लस वन लाइज इनसाइड द रेक्टेंगल। ओके, तो यहीं से वो कंडीशन आ रही है, एम ए लेस देन बी। ठीक है, अगर आप इसको इन दोनों को दोबारा से देखोगे, अगर सेपरेटली देखोगे, तो ये है एम टी माइनस टी नॉट लेस देन और इक्वल्स टू बी, सो टी माइनस टी नॉट लेस देन और इक्वल्स टू बी बाई एम। कंडीशन एक ये भी बन गया ना, एक तो आपका है टी माइनस टी नॉट लेस देन ए तो है ही, बट यहां से क्या, यू आर इम्पोजिंग दैट कंडीशन दैट टी माइनस टी नॉट लेस देन, इफ इट इज लेस देन बी बाई एम, then yn plus 1 belongs to that region. That's why I have taken a minimum of a and b by m. Clear है ये पॉइंट बच्चों? Say something. Okay,
Okay, so if you don't say anything, I will assume that you are understanding everything. So I am writing on next page. Okay, so therefore, so I'm rewriting yn plus 1 minus y0 less than or equals to m times आया था ना t minus t naught less than ma less than b. So from here you can also write t minus t naught less than, or you can write provided. So you can, here you can say yn plus 1 minus y0 less than or equals to b provided t minus t naught less than b by m. तभी हमने शुरू में कहा था इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज मिनिमम ऑफ a and b by m. So this shows that the graph of yn plus 1 is inside rectangle A. So by induction, each yn is inside the rectangle A for every n. इंडक्शन से प्रूव कर दिया ना हमने कि फर्स्ट उसके इनसाइड है, n को अज्यूम किया तो n प्लस 1 भी उसके रीजन के इनसाइड है. Okay, so next step, now we now compare. अब हम कन्वर्जेंस की बात करेंगे. So we now compare successive Picard's इटरेट्स. जो प्रोसीजर को आप रिपीट करते हो उसको हम इटरेशंस भी बोलते हैं और इटरेट. So for n greater than or equals to 2, first तो trivial है, y1 is y0. So starting from 2 we have, अब हम दो का डिफरेंस निकालेंगे. मैं फर्स्ट किसका निकाल रहा हूँ, yn plus 1 माइनस yn. कैसे लिखोगे, दोनों की वैल्यू लिख दो. yn plus 1 क्या होगा, y0 plus t naught to t fs yn s ds, और yn क्या होगा, y0 minus t naught to t fs yn minus 1 s ds. So you can check y0 will be cancel out. इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो. सेम चीज कर रहा हूं जो मैंने पहले किया था. इंटीग्रल को बाहर लिख रहा हूं मैं, मिनिमम ऑफ t टू, जो भी मिनिमम होगा t और t नॉट में, और मैक्सिमम जो भी होगा t और t नॉट में. दोनों फंक्शन सेम ही है, मतलब इंटीग्रल लिमिट सेम है दोनों में. सो यू पुट मॉडुलस इनसाइड. तो पहला फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन. ओके, नाउ यूज लिप्सेट कंडीशन. अब लिप्सेट कंडीशन क्या कहता है, लिमिट सेम लगाओगे आप. लेट अस राइट ऑन नेक्स्ट पेज. यूज लिप्सेट कंडीशन हियर. सो लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ t टू t नॉट. अब लिप्सेट कंडीशन क्या कहती है, सो दो फंक्शन का डिफरेंस, लिप्सेट कांस्टेंट l, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, yn माइनस yn माइनस 1s यूजिंग लिप्सेट कंडीशन. यही था कंडीशन. एफ टी y1 माइनस एफ टी y2 लेस देन और इक्वल टू l
L टाइम्स y1 माइनस y2, तो y1 की जगह yn है और y2 की जगह n माइनस वन है। ओके, सो नाउ वी यूज, अब इसको लिख के हम लिखते हैं। सो वी हैव फ्रॉम दिस पुट n इक्वल टू 2, सो y2, सो आई एम राइटिंग फर्दर। फर्स्ट फर्स्ट क्या बनेगा डिफरेंस, y2 माइनस y1। तो इसमें अगर आप दोबारा से लिखोगे, y1 y2 की वैल्यू लिखो, y1 की वैल्यू लिखो, तो y2 क्या है, y नॉट प्लस t नॉट टू t fs y1 ds, और y1 क्या है, y नॉट ही है, सो दिस विल कैंसल आउट। तो इसको सेम वे में लिख सकते हो, मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके, सो एफ एस, सॉरी y2 में y1 यूज होगा, ठीक है। y1 क्या है आपका, y0 ही है कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू f इज बाउंडेड, सो f की जगह m आ जाएगा। बाउंडेड है ना, बाउंडेड है तो उसकी क्या लिख सकते हो, m ds का इंटीग्रल s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो यू विल गेट t माइनस t। एक और लिख लो, एंड नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, y3 माइनस y2, डायरेक्टली लिख सकते हो इसे आप, ऊपर जो लिखा मैंने। तो अगर डायरेक्टली लिखोगे तो ये बनेगा मिनिमम टी टू टी नॉट, मैक्सिमम टी एंड टी नॉट, यहाँ पे एल आ जाएगा, एंड अब y3 माइनस वाई नॉट लिखो, y3 देखो इसको दोबारा यूज करना है, yn प्लस वन माइनस वाई है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, n माइनस वन, एक कम हो गया। तो y3 माइनस y2 लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, और y2 माइनस y1 आपने लिख दिया पहले, एम टी माइनस टी नॉट, तो इसको यूज कर लो यहाँ पे सेकंड में। यूज करोगे तो लिप सेट से एक एल तो आना ही है, ये दिस एल एज इट इज, और पिछले वाले से एल एम टी माइनस टी नॉट टी टी, ये आएगा। बट टी की जगह आप एस लिख रहे हो तो अंदर आप लिख देना इसको एस माइनस टी नॉट डी एस, इसका इंटीग्रल कर लो, सो एल एम एस स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, एस माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई टू, सो दिस विल बी टी माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई टू। सिमिलरली एक बार और करोगे तो जो y4 माइनस y3 अब करना, सो दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू एल स्क्वायर एम टी माइनस टी नॉट क्यू बाई 6 आएगा, 6 विल बी 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इस पे भी इंडक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो सिमेट्री क्या बन रही है, अब सिमेट्री से लिखते हैं, सो वी कैन यूज इंडक्शन। अब इंडक्शन में आप क्या लिखोगे, n के लिए ट्रू मानोगे और n प्लस वन का शो कर दोगे नेक्स्ट। सो वी यूज इंडक्शन ऑन n। So firstly you assume that this is true. So I am assuming that yn plus 1 minus yn, तो सिमेट्री बन रही है, y4 माइनस y3 था तो l2 था, तो यहाँ पे आ जाएगा ln माइनस वन, m एक ही आएगा, t माइनस टी नॉट m बाई n फैक्टोरियल।
बाय सीइंग दिस आई एम राइटिंग इट, यहाँ y3 था तो L2 3/3 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे n है तो n-1 n/n फैक्टोरियल। सो आई एम अज्यूमिंग दिस। अब इंडक्शन क्या कहता है कि अगर नेक्स्ट का भी सेम बन जाए देन इट्स ओके। तो अब नेक्स्ट लिखोगे, अगर वो इस फॉर्म में बनता है देन इट इज ट्रू फॉर एवरी n। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, yn+2 -yn+1। अब आपने ये यूज करना है इसमें, दिस वन। सो यूजिंग दैट you got L। अब उसको यूज करना है और प्रीवियस वाला यूज करना है। Ln-1 ये था और एक L यहां से आएगा तो टोटल आ गया आपका L⁻n। m तो एक ही है, इंटीग्रल हो जाएगा मिनिमम t and t0 टू मैक्सिमम t and t0। और किसका इंटीग्रल आएगा, s-t0 इसका इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रल कर लो, सो दैट इज ln m t-t0 n+1 डिवाइड बाई n+1 फैक्टोरियल। सो दिस इज ट्रू। तो सेम बन गया उसी वे में, n की जगह n+1 आ गया। देयरफॉर फॉर ईच n, तो मैं एक जर्नल लिख लेता हूं। सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी n। सो yn+1 minus yn, so ln-1 m। अब ये आ रहा है t-t0, इसको लिख सकता हूं मैं अल्फा। मैंने ये अज्यूम किया था ना पहले, t-t0 लेस देन और इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, m/l, एक l मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, लिख सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस। अब ये एक जानी पहचानी चीज है, x⁻n/n फैक्टोरियल किसके एक्सपेंशन में आता है। ऑफ कोर्स वी विल मेक ए सीरीज इन नेक्स्ट स्टेप। इफ यू थिंक e⁻x, उसका एक्सपेंशन बनेगा ये। so this is an expansion of this would be expansion of e⁻x, so we use this to show that we have a Cauchy sequence so I am writing Cauchy सीक्वेंस कैसे बनेगा, ym-yn, दो डिफरेंस लिख रहा हूं मैं, ym-yn। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ym को ym-y m-1 प्लस ym-1 ym-2। चाहे पहले आप ये लिख लो फर्स्टली, so you will have equality here -ym-2 and so on yn+1 -yn। जो भी m और n होंगे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। एक m नंबर है, m-1 m-2 3 एंड सो ऑन, एक आपका n होगा कहीं ना कहीं पे। तो आप
मान लो एक m आपका 10 है, n 5 है, ठीक है, तो y10 माइनस y9 प्लस y9 माइनस y8 प्लस y8 एंड सो ऑन, तो y5 पे आ जाओगे ना आप ऐसे लिख सकते हो। अब ट्रायंगल इक्वालिटी लगा दो राइट हैंड साइड में। तो अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि अब जो हमने प्रीवियस रिलेशन है वो दो कंजक्टिव के लिए पता है आपको, n और n+1 के लिए, ठीक है, तो दो दो कंजक्टिव वाला रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो y m-1 minus y m-2 and yn+1 minus yn and so on। ओके, अब सब पे लगाते जाओ तो m/l, पिछले से m/l कॉमन आ जाएगा और सम आप लिख सकते हो k n से लेके m-1 तक, l अल्फा पावर k by k फैक्टोरियल। एंड वी नो दैट एज जो e पावर l अल्फा, इसका एक्सपेंशन क्या बनता है, ये बनता है k 0 to infinity l अल्फा k by k factorial, and you know that e power something exponential, this is a convergent series, so this sum is always finite। अब कहने का मीनिंग है कि अब कॉशी सीक्वेंस कैसे लिखते हो, कॉशी सीक्वेंस की पहचान यही है कि दो दो टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर m एंड n सम ग्रेटर दे आर ग्रेटर देन n, कि एक नंबर ऐसा होगा, एक नंबर n, उसके बाद क्या होगा, आप सीक्वेंस की कोई दो टर्म का डिफरेंस लो दैट इज लेस देन इप्सिलॉन, कॉशी कॉशी कन्वर्जेंस। So for given a Fallon positive, there exists a number n0 so that after that number n0 m/l summation k equals to n to infinity, this is less than epsilon। अब आपको ये पता ही है x पावर k by k फैक्टोरियल लिमिट k गोस टू इन्फिनिटी किसको कन्वर्ट करता है, जीरो को अप्रोच करता है, तो ये वही चीज बन गई when k is large। अब k लार्ज होने का मीनिंग है यू राइट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, बार बार लिखते जाओ, सो आफ्टर सम टाइम these two successive approximation they will be close to each other। अब दोनों एक दूसरे के क्लोज है मींस यू आर गेटिंग कन्वर्जेंस, यही तो होती है कन्वर्जेंस। ये आप टर्म लिखते जाते हो, जैसे सीक्वेंस 1/n है, फर्स्ट टर्म 1/2 डिफरेंस ज्यादा है ना, 1/2, फिर 1/3 आपने 1000 टर्म लिखा, क्या आया 1/1000, अगला क्या आएगा 1/1001, इनका डिफरेंस निकालो, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसमें भी यही मान रहा है कि आपके बार बार इटरेट करोगे, सो दीज पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन दे बिकम क्लोज टू ईच अदर and that is called Cauchy convergence। थोड़ा ही रहेगा, don't worry, okay। So this means that for any m(n) after n0 we have ymt minus ynt, they are less than epsilon, so that is yn is a Cauchy sequence। And you know that
the Cauchy sequence is convergent, so the sequence converges uniformly. अब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो कोई ना कोई लिमिट भी होगा, सो टू सम, तो लिमिट होगा, लिमिट कांस्टेंट होती है, सो दिस कन्वर्जेस टू सम कांस्टेंट फंक्शन से y of t. So finally, so we are now at final step. Now we show, अब हमने शो कर दिया कि कॉशी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करता है। अब हम शो कर देंगे दिस y satisfy the integral equation. So now we show y satisfy, यानी कि जो y t लिखा आपने, that y t satisfy the integral form of IVP. अब लिमिट क्या होगी इसकी? सो अब मैं पहले वाई टी लिख लेता हूँ। वाई टी जो हमने लिखा है, वाई टी की फॉर्म क्या होगी? सो दैट विल बी y0 प्लस t नॉट टू t एफ एस, ये फॉर्म होगा वाई टी का। नाउ अब हमने वाई एन क्या लिखे थे? अप्रोक्सीमेशन क्या है हमारे? वाई एन क्या है? वाई एन इक्वल्स टू y0 प्लस t नॉट टू t एफ एस वाई एन माइनस वन डी एस। अब अपने शो क्या करना है कि दिस कन्वर्जेस टू दिस, ये शो करना है। अब हमने ऊपर शो कर दिया, सो वाई एन दे कन्वर्जेस टू वाई टी, दिस इज डन। लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्जेस टू दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड y0 दोनों साइड में फिक्स है। अब रिमेनिंग क्या रह गया? अगर अगर आप इंटेग्रल ये शो कर दो कि दिस इंटेग्रल कन्वर्जेस टू दिस इंटेग्रल, देन प्रूफ इज डन। ओके, एक स्टेप बचा है, वो लिपसेट से हो जाएगा जस्ट। सो हियर yn converges to y as n goes to infinity. So we show, अब शो हम क्या करेंगे? जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल converges to integral. So I'm writing on next page. So I'm showing that. So this is converges to this one. So for this हम क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर डिफरेंस 0 होगा इट्स ओके, तो दोनों का डिफरेंस लिख रहा हूं मैं मॉडुलस लेके, टी वाई एन माइनस वन का और दोनों का डिफरेंस। अब सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे हम, लिमिट लगा देंगे मिनिमम टी टू टी नॉट एंड मैक्सिमम टी टू टी नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ, सॉरी टी को भी एस लिखना है आपने इसको, एफ एस वाई एन माइनस वन एस माइनस एफ, लिमिट दोनों में सेम है। यहाँ सॉरी यहाँ पे वाई आएगा ना, वाई, so just write ys and then ds. ओके, लिपसेट यूज कर लो। तो लिपसेट क्या कहती है? सो यू कैन राइट मिनिमम सेम लिमिट, यूज लिपसेट कंडीशन, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू एल टाइम्स वाई एन माइनस वन। अब आपने ऊपर शो कर दिया these yn, all yn they converges to y, तो ये डिफरेंस क्या बनेगा? 0।
नहीं, आपने ऊपर शो कर दिया ना, एज एज ऑल वाई एन, तो वाई एन माइनस वन भी वाई को कन्वर्ज करेगा, देयर फोर राइट हैंड साइड दैट कन्वर्जेस टू जीरो। अब राइट हैंड साइड जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, इसका मीनिंग दोनों ये सेम है। ओके, सो राइट हैंड साइड गोज टू जीरो, ये आ गया ना अभी आपके पास लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो इसका मीनिंग ये ट्रू है। सो फाइनली therefore in limiting case, or you can write this integral t naught to t f s y n minus 1 ds that converges to t naught to t, so this means therefore yt is a solution. So we have shown existence of the solution, जो लिमिट है that is a solution. Any doubt in this proof? Okay, so I'll stop now. We will prove uniqueness in next class.